Hi, welcome to the second video of our budget lines. Let us start this video with a question. So let's suppose there are two people. So as you can see what I've been writing, there are two people, A and B. They have exactly the same tastes. They walk into a shop together. That shop has only two goods, good X and good Y. Now they also have the same income. दोनों के पास सेम इनकम है. Let's say 100. Let us say price of good X is 20 rupees and price of good 2 is 10 rupees. ठीक है, दोनों के सेम टेस्ट हैं, दोनों की इनकम सेम है 100 rupees. दोनों के पास जो हमारे दोनों एक ही शॉप में घुसते हैं, दो गुड्स हैं उस शॉप के अंदर X और Y. X का प्राइस है 20 rupees per unit और Y का प्राइस है 10 rupees per unit. Okay, now suddenly A gets a call from home. And he gets to hear that जो good X है that is very harmful. Got a call from home and in that call he found out that X is very harmful. So suddenly he starts not liking X. Suddenly he starts not liking X. Now my question is, how will the budget line change? The question is, how will the budget line change? I hope all of you understood the scenario. मैंने बोला दो लोग हैं A और B, दोनों के सेम टेस्ट्स हैं, दोनों के पास सेम इनकम है, दोनों एक शॉप के अंदर एंटर करते हैं. शॉप के अंदर दो गुड्स हैं X और Y. X का प्राइस है 20 rupees per unit, Y का प्राइस है 10 rupees per unit. A in the meantime gets a call from home और उसको पता लगता है इन दैट कॉल कि X जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो सडनली वो उसको क्या लगता है, he doesn't like X anymore. So now my question to you is, how will the budget line change? तो हमारी अगर सपोज हाइपोथेटिकली पहले बजट लाइन ऐसी थी, अब हमारी बजट लाइन को क्या होगा? Now I want you guys to really think about this one. If you want, pause the video here for 10 minutes, 5 minutes. Think about the answer and then move on. Because if you just move on without thinking the answer, it's not going to suffice the purpose. So think about the answer. क्या होगा? What will the new budget line be like? So the budget line will not change. Why? Because उसका यहाँ पे जब उसको लगा X harmful and he starts not liking X, then his taste is changing. His taste is changing. ठीक है, उसका taste change हो रहा है, उसकी affordability नहीं change हो रही है. His affordability will still remain the same. How? उसकी income जो पहले थी उतनी ही है. Did income change? No. Price जो good one का था वो उतना ही है. Did I say the shopkeeper has changed the price? No, which means it's the same. Price of good two भी same है क्योंकि shopkeeper ने उसका price भी change नहीं किया. तो अब क्या हुआ, क्योंकि A का taste change हो गया, उससे उसकी affordability तो change नहीं होगी ना. यहाँ पे उसके पास थे 5 units, 100/20, अभी भी 5 है, पहले भी 5 थे. यहाँ पे he has 100/10 which is 10 units, अभी भी 10 है और पहले भी 10 ही थे. The slope of the budget line is -2, which is also the same. My budget line is exactly the same because what is changing? The tastes are changing. Affordability is still the same, which is why in the budget line there will be absolutely no change. So this example or this question should show you that अभी हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ affordability की. तो इसके अंदर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का कोई लेना देना नहीं होता. जब भी हम सिर्फ बजट लाइंस की बात करते हैं, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की, और जिसके अंदर हमारे पास किसी भी और चीज़ का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, एक्सपेक्टेशंस का कोई लेना देना नहीं होता. विच इज़ वाई जब हम बोलते हैं तो 5 units आर अफोर्डेबल, 5 units of good X1 are affordable. We are only talking about affordability. मैंने ये थोड़ा ना बोला उसने खरीद लिया, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ ना कि वो अफोर्ड कर सकता है. Right? So right now we're not talking about demand. Right now we're also not talking about taste and preferences. Right now what are we talking about? Only and only affordability. Right? Let's move on. Let's talk about a concept called numeraire. It's a very simple concept. You don't get a direct question, but indirectly it is applied in many parts. हमारे पास budget equation थी P1X
plus P2Y is equal to M. Suppose I tell you that X is wheat. Now the question is, what is Y? Y, I say, is rest of the goods. So the problem that I'm trying to solve for, or the question that I'm trying to answer is कि मेरे पास जो given income है उसमें से मैं wheat के ऊपर कितना spend करती हूँ, how much of wheat do I buy? तो इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ कि मैंने wheat तो ले लिया x को, लेकिन y क्या है, बाकी जो जो चीजें मैं खरीदती हूँ, rest of the goods. तो अगर मैं y को rest of the goods ले लूंगी, so what will be the price which is going to be representative of y? It can't be the average price because the number of units for each person will be different. It can't be anything else. So that is why then when y is taken as the rest of the goods, P2 is taken as 1. This concept of taking P2 as 1 is called the numeraire. Let me repeat myself. अगर मुझे सिर्फ ये पता कराना है कि मेरी गिवन इनकम में से मैं एक्स जो है, वीट जो है, उसके ऊपर कितना स्पेंड कर रही हूँ, या फिर वीट जो है वो मैं कितने यूनिट्स ले रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक्स तो हमारा है जी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वीट दैट आई एम बाइंग. एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वीट. Then what is y? Y becomes the rest of the goods. Y becomes the rest of the goods. जब हमने y को rest of the goods ले लिया तो P2 क्या हो जाएगा? P2 has to be representative of the rest of the goods price, है ना? P2 should be the price. P2 क्या होगा? P2 will be the price of rest of the goods. अब हम क्या लेंगे उसके अंदर? Suppose rest of the goods में मैंने लिया clothes, rent, other groceries, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एक्सेट्रा. अब इतनी सारी चीजों का अगर मैं लूँ, P2 क्या होगा? P2 में मैं बोलूंगी अच्छा मेरा क्लोथ्स तो है, वो मैंने 5 यूनिट्स खरीदे और 100 रुपए का पर यूनिट आता है, तो 500 तो इस पे हो गया. तो मैं तो सबको ऐसे कर कर करके इसकी वेटेड एवरेज निकालूं, जो कि हमारे को हेल्प नहीं करता है, इसलिए हम नहीं करते हैं. हम क्या बोलते हैं इंस्टेड कि जैसे हमने बोला y is rest of the goods, then y is number of units of rest of the goods. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मनी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे इसको इक्वल टू इनकम करना है. इसको मनी फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, आई विल अज्यूम P2 टू बी इक्वल टू 1. P2 इक्वल टू 1 मतलब जो मेरा प्राइस ऑफ गुड 2 है वो हमने 1 ले लिया, रूपी 1 ले लिया, तो जब हमने उसको y से मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स द अमाउंट ऑफ मनी. कितना पैसा इनकम में से मैं स्पेंड कर रही हूँ गुड 2 पे. द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन गुड 2 आउट ऑफ माय एंटायर इनकम. दिस कॉन्सेप्ट जो उसमें हमने 1 लिया रेस्ट ऑफ द गुड्स के प्राइस को, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेयर. राइट, लेट्स मूव ऑन. लेट्स फिगर आउट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू वी हैव. हमारे पास कौन कौन से तरह के टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी. So whatever tax or subsidy is based on quantity is called a quantity tax or a quantity subsidy. Example, I am saying I'm the government. अगर आप 50 kg से ज़्यादा wheat लोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो wheat का प्राइस है वो P1 ना रह के P1 plus T हो जाएगा. राइट, क्वांटिटी टैक्स. अगर आप 50 kg से ज्यादा वीट कंज्यूम करोगे तो आपका टैक्स, देयर विल बी अ टैक्स ऑन इट, सो P1 will become P1 plus T. That is one way to say it. The other way to say it is the government says for each unit of wheat that you buy, irrespective of आपने 50 किलो खरीदा नहीं खरीदा, फर्क ही नहीं पड़ता. वो बोलता है कि जितना आप वीट खरीदोगे, वीट इतना एसेंशियल है, हमारी इकोनॉमी में इतना कम है कि मुझे हर एक यूनिट पे टैक्स लगाना है. इसीलिए मैंने बोला कि प्राइस P1 जो है वो तो सेलर को चला गया, उसमें मैं एक टैक्स चार्ज करूंगी, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं एक टैक्स चार्ज करूंगी. सो आपको जो आप कंज्यूमर है उसको क्या प्राइस पड़ेगा, P1 plus T. सो एवरी टाइम यू बाय ईच kg ऑफ वीट, जैसे आपने हर एक kg वीट का खरीदा, आपने P1 plus T प्राइस पे किया, जिसमें से P1 जो था वो किसके पास गया, सेलर के पास, और T किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास. तो आपको एज बायर कितना टैक्स पे करना पड़ा, T, और आपको प्राइस कितना पड़ा वीट का, P1 plus T. The second kinds of tax is the value tax, or it's also called an ad valorem tax. Subsidy is the polar opposite of tax. हाँ, so अगर मैं subsidy करती तो वो P1 minus S हो जाता, but I'll come to that.
अभी हम टैक्सेस की बात करते हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ टैक्स इज द वैल्यू टैक्स और द एड वॉलरम टैक्स. वैल्यू टैक्स जो है दैट इज द टैक्स ऑन द प्राइस. That is a tax on the price rather than the quantity, which means that अगर आपके पास पहले था प्राइस P तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्राइस पे करोगे 1.2P, क्योंकि 20% जो है वो क्या है, दैट इज माई टैक्स. 20% जो है वो क्या है, दैट इज माई टैक्स, राइट. सो दिस इज कॉल्ड माई एड वॉलरम टैक्स और वैल्यू टैक्स. The third kind of tax is the lump sum tax. The third kind of tax is the lump sum tax. Lump sum tax का मतलब है गवर्नमेंट ने बोला आपकी इनकम में से आप मुझे, आपके लिए से इनकम 1000 है, गवर्नमेंट सेज कि आप मुझे अपनी इनकम में से 100 रुपीज एज टैक्स दे दो, 100 रुपीज एज टैक्स दे दो. तो क्या होगा, आपकी जो इफेक्टिव इनकम रह जाएगी वो रह जाएगी 900. सो दिस व्हेन यू चार्ज एज टैक्स, दिस इज कॉल्ड द lump sum tax. So कितने तरह के हमारे पास टैक्सेस होते हैं, क्वांटिटी टैक्स, वैल्यू टैक्स and lump sum tax. All these three taxes have been written here, and let's see how will they change the budget line. So let's suppose we have the quantity tax first. The first taxes are quantity tax. तो quantity tax में क्या होता है, price P1 becomes P1 plus T for the buyer. So पहले मेरी बजट इक्वेशन थी P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m. अब हमारी बजट लाइन बन जाती है P1 प्लस T x प्लस P2y is equal to m. So if my initial budget line was here with a slope of minus P1 by P2, now my budget line will swindle inward. My budget line from AB moves from AB to AB1, and my slope becomes minus P1 plus T in the bracket upon P2. My budget line swindles inward. This is what happens in case of a quantity tax. This is what happens in case of a quantity tax. It is same as increasing P1. It is same as increasing P1. What happens in case of ad valorem tax or value tax? Ad valorem tax or value tax. In this, the tax is on the value of price P1. So earlier my budget line was P1x plus P2y is equal to m. और अब हमारी budget line हो जाती है 1.2 P1x plus P2y is equal to m. In this case also, what is happening? हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर स्विंडल कर जाएगी, क्योंकि अफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ही पड़ रहा है, अफेक्ट तो अभी भी सिर्फ गुड एक्स पे पड़ रहा है ना, क्योंकि जो टैक्स है वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है, वो गुड एक्स को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो उसकी क्वांटिटी पे लगे चाहे वो उसके प्राइस पे लगे, लेकिन इम्पैक्ट तो सिर्फ एक्स को ही कर रहा है ना. इसीलिए जो हमारा वाई है वो फिक्स रहता है, जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ वाई जो है वो फिक्स रहता है. इसीलिए हमारे पास एड वॉलरम टैक्स के अंदर भी जो बजट लाइन है वो क्या करती है, स्विंडल करती है. दिस इज ऑल्सो सेम एज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ P1. The last tax, let's look at it, it's called the lump sum tax. Which tax? Lump sum tax. In the lump sum tax, what happens? In the lump sum tax, my budget line will shift parallelly inward. क्योंकि इसके अंदर क्या इम्पैक्ट होता है, इनकम कम होती है, इसके अंदर इनकम इज फॉलिंग, विच इज वाई द बजट लाइन शिफ्ट्स पैरेलली इनवर्ड. पहले मेरी बजट लाइन थी P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m. अब मेरी बजट लाइन हो जाती है P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m माइनस द टैक्स. सो द स्लोप इज माइनस P1 बाई P2. यहाँ पे भी स्लोप सेम है, यहाँ पे भी स्लोप सेम है, तो स्लोप में तो चेंज ही नहीं आया ना, इसलिए दोनों पैरेलल है. किस में चेंज आया, इनकम में, which is why it shifts parallelly inward. Now let us look at all the three kinds of taxes as subsidies. Subsidies के अंदर क्या होता है? So now let's talk about our subsidy also in the same capacity as we spoke about taxes. So the first kind of subsidy is the quantity subsidy. So quantity subsidy works in the same manner जैसे हमने quantity tax करा था. तो टैक्स जो होता है it results in increasing the price.
ठीक है, टैक्स से क्या होता है, प्राइस बढ़ता है. सब्सिडी इज लाइक अ डिस्काउंट. सब्सिडी इज लाइक अ डिस्काउंट. सो सब्सिडी से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द प्राइस. सब्सिडी से प्राइस कम हो जाता है. सो इफ दिस इज माय ओरिजिनल बजट लाइन ए बी, then if let's say the government says कि wheat is a very very important good, इसीलिए लोगों को wheat हमें affordable कराना है. उसको affordable कराने के लिए जो प्राइस फार्मर चार्ज कर रहा है P1, हम उसमें सब्सिडी देंगे हर एक यूनिट पे. तो प्राइस अब हो जाएगा P1 माइनस एस. तो इसीलिए अब हमारी बजट इक्वेशन हो जाएगी P1 माइनस एस इंटू एक्स प्लस P2y is equal to m, which is what makes our budget line swindle outward. So my AB swindles outward to AB1. This is the same budget line जो आएगी हमारी ad valorem या वैल्यू सब्सिडी के अंदर भी, क्योंकि सब्सिडी जब हमारी वैल्यू पे होती है, प्राइस पे होती है, तो इसका मतलब वो हमारे प्राइस को कम कर देती है. तो लेट्स सपोज पहले मेरा प्राइस था 10, अब हमारे को 2 रुपीज पर यूनिट की सब्सिडी मिली, इसलिए मेरा प्राइस रह गया 8. तो इसीलिए पहले मेरा प्राइस था 10, तो मेरी इक्वेशन थी 10x प्लस P2y इज इक्वल टू m. लेकिन अब मेरी इक्वेशन रह गई 8x प्लस P2y इज इक्वल टू m. In this case, what will happen? Because the price of x has fallen, इसीलिए वो b जो है वो b1 पे swindle कर जाएगा, which is why it is going to be exactly the same diagram in a quantity subsidy as well as ad valorem or value subsidy. The third kind of subsidy that we talk about is the lump sum subsidy. Lump sum subsidy is increasing in income. So lump sum subsidy is an increase in income. तो उससे क्या होगा, हमारी बजट लाइन पैरेलली आउटवर्ड मूव कर जाएगी. Our budget line will move parallelly outward. Let us look at some applications of this. इसकी अब हम applications करते हैं. So we are going to now do applications of subsidy and or rationing. Subsidy and rationing. What happens? Let's suppose, let's take the first case scenario of rationing. So government says कि हम wheat को राशन करेंगे. इस फॉर्म में राशन करेंगे कि एक certain quantity के beyond आप wheat खरीद ही नहीं सकते हो. So I'm rationing the wheat in such a manner that you cannot buy more than, let's say, x bar quantity of wheat. तो आप x bar से ऊपर, so x greater than x bar is not possible. You cannot buy any x beyond x bar. आप कोई भी quantity x bar के beyond नहीं खरीद सकते हो. That is the first kind of rationing we are talking about. I want to iterate one thing here. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि राशनिंग जो है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं वर्क करती. राशनिंग काफी सारी चीजों से वर्क करती है जो हम अभी आगे आगे देखेंगे. बट दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ राशनिंग. एक फॉर्म है राशनिंग की जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग इस तरीके से राशन करेंगे कि एक्स बार के बियॉन्ड कोई चाह के भी नहीं खरीद पाए. Right? So anyone who wants to buy an X beyond X bar, that is not possible. What happens then to the budget line? So before the rationing, I had a normal simple downward sloping budget line. I had A and I had a point B. I'm not going to write it here, but you know this is X and this is Y. It is very important to label your diagrams in the exam. This is M by P1 and this is obviously M by P2. ये हमारी बजट लाइन है. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला आप एक्स बार के बियॉन्ड नहीं खरीद सकते हो. देयर आर 2 केस सिनेरियोज. लेट्स सपोज मेरी इनकम इतनी है कि मेरा एक्स बार यहाँ पे लाई करता है. सो माय इनकम इज लेट्स से वेरी लो. क्योंकि मेरी इनकम काफी लो है तो गवर्नमेंट ने जो एक्स बार का स्टिपुलेशन लगाया, मेरी जो अफोर्डेबिलिटी है एक्स की वो वैसे ही उस एक्स बार के स्टिपुलेशन से कम थी. तो क्या होगा, I am not affected by this at all. तो मुझे इस पॉलिसी का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि एक्स बार जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप मैक्सिमम एक्स बार खरीद सकते हो, मैं तो एक्स बार अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा. सो आई एम नॉट इम्पैक्टेड बाय दिस राशनिंग एट ऑल. एक और कंज्यूमर है, उसकी इनकम जो है वो रिलेटिवली हायर है.
उसके हिसाब से जो x बार है that is let's say falling here. This is the x bar. This is where x bar is. Then what happens? उसका जो बजट सेट पहले ये ट्रायंगल था, अब उसका बजट सेट जो है वो इतना रह गया है. So that means that this yellow portion of the budget set has been taken away from him. So ये पहले उसके पास affordable था, अब उसके पास affordable नहीं रहा, तो अब उसकी budget line क्या बनी? His budget line will be A and then this point x bar wala and then x bar and this and this. So this trapezium kind of an area becomes his budget set. This has happened when there's a rationing of the form that government says कि आप x bar के beyond खरीदना चाहो तब भी आप खरीद नहीं सकते हो. Let's look at the second application of these kind of concepts. The second application involves a tax. गवर्नमेंट सेज ओ व्हीट इज टू ग्रेट अ कमोडिटी फॉर मी, मेरे लिए व्हीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं बोल सकता कि आप एक क्वांटिटी के बियॉन्ड खरीदो नहीं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा तो शायद ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी. लोग छुप छुपा के खरीदना बेचना शुरू कर देंगे. दे माइट बी अ लॉट ऑफ क्राइम व्हिच कम्स अप. आई डोंट वांट टू डू दैट. सो what does the government do? गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी क्वांटिटी x बार के बियॉन्ड होगी, सो जब भी x हमारा x बार से कम है तो उसका प्राइस है P1, या उसके इक्वल है तब भी उसका प्राइस है P1. जैसे ही आप कोई कमोडिटी परचेज करना चाहते हो जो कि x बार से ज्यादा है, द मोमेंट यू गो टू एन x विच इज ग्रेटर देन x बार, तब क्या हो गया? आपके प्राइस के ऊपर लग गया टैक्स. आपके प्राइस के ऊपर लग गया टैक्स. कौन सा टैक्स? क्वांटिटी टैक्स. कौन सा टैक्स? क्वांटिटी टैक्स. सो देन व्हाट विल हैपन टू माय बजट लाइन? Do you understand? So पहले हमारे पास थी बजट लाइन ए बी. इस बजट लाइन के ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं है. इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी? minus P1 by P2 and everything is fine. Now the government puts a tax. Let me draw a big diagram for me to make this very clear. So I'm on the initial budget line AB. I have taken wheat on my x-axis. Wheat is my good x-axis. I've taken rest of the goods on my y-axis, which automatically implies that P2 is equal to 1. Remember numeraire? Which is why the slope here is minus P1. Now the government says कि let's suppose this is my vertical line is my x bar. So जब भी आप x bar के beyond consume करते हो तब तो आपका प्राइस है P1. तब तो आपका प्राइस है P1. जैसे ही आपकी कंजम्पशन X1 के बियॉन्ड जाती है, वैसे ही आपके प्राइस कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लग जाएगा, विच इज गोइंग टू द क्वांटिटी टैक्स, जिसका होगा जिसमें हमारा जो प्राइस है गुड का, व्हीट का, वो बन जाएगा P1 प्लस T. सो व्हाट विल हैपन देन? सो यहाँ तक तो मेरी बजट लाइन जो है वो ओवरलैपिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ तक तो मेरी बजट लाइन में कोई फर्क ही नहीं आया, क्योंकि एक्स बार से मेरी कंजम्पशन कम है. जैसे ही मैं एक्स बार हिट करती हूँ उसके बाद मुझे उसके जो नेक्स्ट यूनिट खरीदना है. सो लेट्स सपोज एक्स बार अगर 50 है तो मुझे 51st यूनिट अगर खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू पे अ टैक्स, which means my affordability is going to reduce after that. My affordability is going to reduce after that. यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? My slope here will be minus P1 plus T. See, P2 here is silent. Actually दोनों में upon P2 होना चाहिए, but क्योंकि मेरा P2 न्यूमरेयर है इसलिए मैंने P2 को 1 assume किया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि P2 नहीं है. Otherwise what I'm trying to say is my simple observation to the whole thing is what? That my budget line is going to go in a normal fashion till the time it hits a x bar, and the moment it hits a x bar my budget line is going to be inward. तो मैं क्या बोल रही हूँ? पहले मेरी बजट लाइन थी, my original budget line was this straighter line, है ना. अब क्या हुआ? x बार के बियॉन्ड गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स, इसकी वजह से मेरी इस पॉइंट के बाद मेरी बजट लाइन अंदर जो है वो स्विंडल कर दी. दिस इज अ स्विंडल इनवर्ड पोर्शन, राइट. सो दिस एक्स्ट्रा सेट गॉट कट क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया व्हीट के ऊपर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. टैक्स लगाया व्हीट के ऊपर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एप्लीकेशन. Now the third application goes back to rationing. The third application goes back to rationing. अब इसके अंदर हमने rationing के दो तरीके ढूंढ रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि एक certain level तक, till a certain level,
The government can say I'm going to give free, or the government can say I'm going to give at a reduced price, and after that it resumes a normal price. Let's look at it in detail. तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक एवरेज फैमिली ऑफ 4 के लिए the wheat which is required is let's say 20 kgs. तो गवर्नमेंट बोलती है a month कि हर महीने एक 4 लोगों की फैमिली को सस्टेन करने के लिए 20 किलो आटा चाहिए ही चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मेरा मुद्दा ये है कि मैं सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के लिए, सबकी वेलनेस के लिए इस 20 kgs को राशन करना चाहता हूँ। द गवर्नमेंट वांट्स टू राशन 20 kgs a month for each family as rationing, right? They want to do it. तो वो क्या करते हैं, उनके पास 2 तरीके हैं। वो बोलते हैं कि हम 20 किलो फ्री देंगे, which is till certain level it's free, या फिर वो बोलते हैं कि पहले 20 kg के लिए मैं प्राइस लूंगी रिड्यूस्ड रेट पे, उसके बाद जो मार्केट प्राइस है वो रिज्यूम हो जाएगा। Okay, so let's suppose the price of wheat right now is $100 a kg. I know it's very high, but let's assume that. तो गवर्नमेंट बोलती है for the first 20 kgs मैंने आपको सब्सिडी दी है, you only have to pay 60 rupees a kg, and after that you have to start paying 100 rupees a kg. So let's suppose I am a family of 4, मैं अपनी फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने जाके आटा खरीदा, वीट खरीदा, तो पहले 20 kgs के लिए मैंने पे किया 60 rupees a kg, बट लेट्स से माय कंजम्पशन इज हायर, माय फैमिलीज कंजम्पशन इज हायर, तो जब मैं 60 rupees a kg ले रही हूँ तो वो सिर्फ 20 kgs ले सकती हूँ। द मोमेंट आई डिमांड दैट आई वांट 21st kg, तो उसके 21st kg के लिए मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? आई विल हैव टू पे 100 rupees a kg. Do you understand my point? So it's like the price has changed. Okay, this is my original budget line AB. This is the budget line without rationing. I'm drawing 2 diagrams because I'm going to show you the 2 situations simultaneously. Okay, this is my AB. This is the budget line that I have without rationing. तो मेरा इसके अंदर स्लोप क्या है? -100. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया wheat और यहाँ पे क्या लिया? Rest of the goods. Exactly. So इसकी वजह से क्या हुआ? My P2 becomes 1. Numeraire concept, ideally it would have been -100 upon P2, लेकिन क्योंकि P2 1 है, इसीलिए हमारे पास बजट लाइन का स्लोप क्या रह गया? सिर्फ -100. इधर भी और इधर भी सेम कॉन्सेप्ट, ये है wheat. Alright, and let's talk about the certain free units. अब गवर्नमेंट बोलती है फर्स्ट के सिनारियो में कि first 20 kgs of wheat is free. First, let's suppose this is my 20 kgs. First 20 kgs of wheat is free. The moment you say it's free, this budget line becomes horizontal till here. Why? Look at this point. Let me call this point 1. And I'm going to just dissect 1 here. 1 को यहाँ पे discuss करते हैं. पहले 1 पे, let's say 1 is a 10 kg of wheat. जब मेरे पास राशनिंग नहीं थी, 10 kg of wheat खरीदने के लिए at 100 rupees a kg, I would have had to spend $1,000. Suppose, for the sake of understanding, let's suppose मेरी इनकम जो है वो है 10,000, ठीक है, 10K. तो मैंने जब 1,000 रुपए वीट के ऊपर स्पेंड किए होते 1 पे, तो मेरे पास रेस्ट ऑफ द गुड की कंजम्पशन के लिए कितने बचते? सिर्फ 9,000 रुपए. आई विल रिपीट माई सेल्फ. मैं 1 जो भी अब मैंने पॉइंट लिया 1 उसको डायसेक्ट कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ अभी राशनिंग नहीं है, तो तब मैंने जब 10 kg of wheat खरीदा, then to buy this 10 kg of wheat, I'm spending how much? $1,000. है ना? मेरी इनकम अगर 10,000 है, तो अगर 1,000 रुपए मैंने wheat के ऊपर स्पेंड कर दिए, तो बाकी गुड्स के लिए मेरे पास कितना पैसा बचा? 9,000. So my point 1 becomes 1,000 units of good 1, 9,000 units of good 2, क्योंकि P2 1 है, न्यूमरेयर है, इसलिए मैं 9,000 रुपीज को 9,000 यूनिट्स ले सकती हूँ. अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला 20 kgs of wheat is free. 20 kgs of wheat is free, which means that now when I'm at 1, now when I'm consuming 10 kgs of wheat, तो क्या मुझे उसके लिए 100 रुपए पर किलो देने की जरूरत है? नहीं, फ्री है. सो दिस 10 kg के साथ मेरे पास जो अफोर्डेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? दिस अफोर्डेबिलिटी मूव्स टू 10 kgs of wheat, 10,000 rupees which can be spent on the other goods.
Sorry, this was 10 kgs of wheat. 10 kgs of wheat, comma 10,000 units of other goods. क्यों? क्योंकि 10 किलो free है, which is why this point 1 moves upward here. Similar analysis you can do for point 2. But I don't need to do it. You can do it if you want. Which is why for 20 kgs, my affordability, major affordability है good 2 की, वो कितनी रहेगी? 10,000 की 10,000. Which is why 20 kgs of wheat तक मेरे पास जो line है budget line की, वो क्या होगी? Horizontal. उसके बाद क्या है? अब मुझे 21st kg भी अगर लेना है, तो मुझे 100 rupees a kg pay करना है. So which is why this line further on becomes parallel. क्योंकि इसमें मेरे पास गैप क्या है? The gap forever, when I measure it, I can measure it vertically or I can measure it horizontally. The gap forever is 20 kgs. The gap forever is 20 kgs. And the gap on the vertical side is 20 into 100, 2,000 rupees. Why? क्योंकि मैं तो मेरी अफोर्डेबिलिटी 2,000 रुपए से बढ़ गई है. But you know, when I'm getting 20 kgs of wheat free, that means that I'm getting an extra affordability of 2,000 rupees na, which can only be spent on wheat, not on the other goods. So मेरी जो affordability है वो कितने से increase हो गई है? 20 kgs से. This gap is what? 20 kgs. Vertically gap 2,000 क्यों है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. But you have to understand this gap horizontally is how much? 20 kgs. क्योंकि 20 kgs मुझे क्या मिला अब? फ्री मिला. क्योंकि 20 kgs फ्री मिला तो इन अ वे में जो बजट लाइन है वो 20 के बाद ही शुरू हुई ना, क्योंकि जो ट्रेड ऑफ आना शुरू हुआ गुड्स के अंदर वो सिर्फ 20 के बाद आना शुरू हुआ. उससे पहले तो मुझे वीट के लिए कुछ स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं थी. राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? Let's do the other case of rationing. So the other case of rationing is when the price of good 1 is reduced for the first 20 kgs. So पहले 20 kgs के लिए I don't have to pay 100. I have to pay only a 60. So again, this is let's say my 20 kgs. So till 20, I don't have to pay 100 rupees a kg. I only have to pay a 60. But कुछ तो मुझे pay करना है, right? तो अगर मैं 100 pay करती तो मेरा trade off ऐसा था. रिमेंबर ट्रेड ऑफ, मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी ट्रेड ऑफ. अब क्या हुआ? क्योंकि अब मेरे पास प्राइस ऑफ गुड 1 कम हो गया है तो मेरा जो ट्रेड ऑफ है वो भी कम हो गया है. मतलब मेरी जो स्लोप थी वो -100 से -60 रह गई है. ट्रेड ऑफ कम हो गया है, which is why my slope changes. And after that, after the 20th kg, from the 21st kg onwards, for the 21st kg, I have to pay the same price. क्या? 100 rupees a kg. Which is why then this becomes parallel after this. So this budget line is a little outward till 20 and after that it becomes a parallel line. Now what is the difference between this triangle and this triangle? In this triangle, this is horizontal because you don't have to spend a penny. आपको एक पैसा नहीं खर्च करना उस वीट को खरीदने के लिए. इसके अंदर आपको पैसे स्पेंड करने हैं. क्यों स्पेंड करने हैं? क्योंकि आपका वीट फ्री नहीं हुआ. आपका वीट जो है वो 100 rupees a kg से सिर्फ 60 rupees a kg हो गया है. Which means you're still spending money, but you're spending money at a lower rate, which is why you get some extra affordability. But the extra affordability is not as much as in this case. It is lesser, but it is still there. So there is extra affordability is why you see this triangle, but it is not as much as in this case because यहाँ पे तो wheat बिल्कुल ही free था, but यहाँ पे wheat का price जो है वो government ने थोड़ा कम कर दिया है. Alright, so this is our basic budget line changes. Now this is what Varian has done. For the sake of our understanding being really complete, मैंने assignments में से different assignments में से different colleges के assignments में से काफी सारे questions निकाले जो कि I have given you as an assignment. Please do them and then you can cross check your answers in the next video, which is the solutions to those assignment videos. All right, thank you.